अपना गाड़ी में नहीं आके इनको बस देना चाहिए, बस सर्विस देना चाहिए। एक्सेप्ट चीफ सेक्रेटरी सब बस में चलने से ठीक है। बस में आना है 9 बजे और बस में जाना है 4 बजे, और अपना गाड़ी सेक्रेटरीट गेट से किसी को घुसने मत दो, एक्सेप्ट एमएलए एंड मिनिस्टर। तब तो ये लोग डिसिप्लिन होगा। अपना गाड़ी होगा तो चलने का आदत होगा, चला जाएगा जल्दी, 2 बजे चला जाएगा, 1 बजे चला जाएगा, वापस आएगा नहीं। काम बहुत है, बहाना बहुत है अपना लाइफ में, अपना लाइफ में बहुत है एक्सक्यूजेस है, अपना रूटीन भी है, अपना प्रोग्रेस भी चाहता है। तो इसलिए ये एटलीस्ट सेक्रेटरीट में ट्रैफिक कंजेशन को भी थोड़ा बचेगा और बहानाबाजी से भी थोड़ा बचेगा। ट्रैफिक हो गया, ये हो गया, लेट होने में भी, आने में लेट होता है, हो के आता है, जाने में बहुत जल्दी चला जाता है। तो वो काम कब करेंगे हम? तो इसलिए ये मेरा जो प्रपोजल है, तो स्पीकर सर और डिप्टी स्पीकर सर, आई एम प्रोफ्यूजली थैंकफुल to His Excellency the Governor of Arunachal Pradesh, who has been pleased to deliver his address highlighting the unwavering commitments of the government towards the progress and prosperity of the state. Coming to the Honorable Prime Minister's vision of reform, perform and transform, let us all place together to work collectively for the inclusive development and the sustainable development of the state. Let us all ensure that the Arunachal Pradesh emerges as a beacon of inclusive and sustainable development. Together strong, we will proudly stand, transforming the dreams across the land of the rising sun. With these few words, I conclude my speech. Thank you. Next, Toko Tatum. Thank you, Speaker Sir, for allowing me to be a part of this proceeding. Compliment, to comment, and dare I say to suggest on the speech, which is almost like a light post, a guiding map for the state in the years to come, delivered by Honorable, Excellency, Governor of Arunachal Pradesh. Sir, as I've gone through the Honorable Excellency's speech, I really appreciate. In fact, I think the government of Arunachal Pradesh, which is led by I would say, a visionary chief minister and a very seasoned leader, and also the Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh, and the way they have handled the state and the way they have handled the finances, you don't have to look much. You just have to see the GSDP growth of the state. And I was just going through. They have, in fact, delineated. We have a GSDP which increased by 136%. And per capita income has increased by 104%. Tell me any state which has achieved this kind of achievement. It is a wondrous achievement by this current state government. And I think as a new recruit to this assembly, I must say, well done, sir. We are proud of you. And we hope to see this kind of stride of development in the years to come as well. Our own revenue increase have seen another quantum leap. We had around 1,200 to 1,500 crores of our own state-owned revenue. It has gone up to 3,000 plus now. So when I was going through the governor's speech,
I would like to comment on the certain policies that our state government will be taking up. And I was just listening to our Honorable MLA, Mr. Muchumiti. While commenting on it, he started with the equitable growth. We are growing. India is growing. But what kind of growth? That we have to understand. According to Oxfam, 1% of Indian hold 40% of national wealth. In 2018 and 19, the 63 billionaires of India, their total wealth surpassed the union budget of India. That was on 2018-19. In the tune of 24,000 lakhs, 42,200 crore. And I am very proud that Arunachal government is talking about equitable growth. Equitable growth, whereby every individual in the state, by the statement, means that we will be taken care of. And I'm proud to be a part of this government. So, for any society to grow and for any civilization to see the kind of zenith it has reached, we talk about education, we talk about health. And Arunachal government has been giving the time in the most earnest manner. We have seen it as I was going through the report. They have seen a 10% growth in the past percentage. But also there are challenges. As in my district, we have seen the reverse in Kipanyor. Sir, when we talk about the growth of a state, I was listening in 2020-21 when our Honorable Prime Minister, Mr. Modi, he talked about India reaching a $5 trillion economy. And they said by 2032, we should be $10 trillion economy. Then he talked about the change of perception which our colleague, our senior, Mr. Wangam Saab from Longding was speaking. He said, perception needs to be changed. Soch badalna parega. That's what I've heard from our Honorable Prime Minister. And along with him, the maverick of a man, a foreign minister, Sri Jaisankar ji was there. And he also spoke the same thing. Soch badalna parega. And Honorable Prime Minister said, if India has to grow, Northeast has to grow. They said a time will come, we will be the growth of India for this beautiful country. Which means that Government of India has a special place for Arunachal. And I was just attending a week back or two. This was like a fairy tale when a union minister comes down and he launches the Unnati scheme in Arunachal Pradesh. I don't know when was the last time we have seen this kind of steps. It fills me with hope. It fills me with pride. So, I saw in the outline of the speech, particularly in the planning department, we are blessed with a visionary planning minister and investment. And now they're talking about bottom-up approach. And I think this should be the way forward. It should not be imposed from the top.
And so, as I am touring, I got a suntan, as I'm touring my constituency, I couldn't agree more. When our chief minister and our deputy chief minister says that we need a bottom-up approach in planning, I cannot agree more. Because planning cannot be from the top. We cannot decide what a village needs in our constituency. The people there, the elected leader, the Panchayat Raj leader, they are the one who can give us the right approach. Gram chairperson, the Jilas, the district, this is the way forward. And I'm so happy to see that it is being outlined in His Excellency's speech as well. So, I'm also, another striking feature that I've seen was the institution of a state-level policy think tank, Institute for Transforming Arunachal. All I can say is that our state is in the right hand. They are coming out with ideas that, as an entrepreneur, I always used to think that it should be the way, and they're doing it. But I must congratulate the state government for coming out with such noble, innovative ideas that we haven't seen so far. Sir, when you talk about the development of Arunachal Pradesh, we cannot ignore and we cannot set aside our strength, which I see in agri, horti and allied activities. Speaker, sir, I believe if we have to grow, then agri, horti has to be sustained. And as for horticulture, sir, we are blessed with 18 lakhs hectare, which is almost the 21% of the total geographical area of the state. We have more temperate land cultivable than the 3 states of India put together. Jammu and Kashmir, Uttarakhand. If you talk about the land we have, it needs the right policy. Then I saw that you have come out with farm to fork policy, and I've seen and I read that there will be an agri-horticulture policy. But I'm also moving a resolution on State Nursery Act. And I think I'm in sync with the state government when I saw they have already deliberated on it. So in the horti sector, if we have to grow, we need training institute. Way back in 2008 and 9, 2 training institutes were established, but it could not function properly. I think we need that institute to be revived and re-established, because our farmer needs the training in a most scientific manner. In that, sir, if I could add, the HFA, which is the frontline worker there, their qualification is class 10 to BA pass. Horti is a technical line, so is agriculture. We need people, we need resources with that kind of background. In my speech, sir, I would like to propose that can the state government rethink on a recruitment policy, whereby instead of just giving it to the class 10 and the BA pass graduates, can we focus on those students who has done BSc Agri and Horti? Because they are the right kind of resources that we need to be looking into. And sir, if you do that, I believe Horti Agri will go a long way. Sir, when they talked about
the growth of northeastern state and Arunachal Pradesh. Sir, as I was listening to our Trade and Commerce Minister, Piyush Goyal Sahab, in our state banquet hall, which was attended by our Chief Minister and Deputy Chief Minister as well, he said that our boundary is our opportunity. Sir, Northeast has around 5,700 kilometers of international boundary, out of which Arunachal has around 30% of it, almost 1,700, I believe. And with Burma, we share around 520 kilometers. And South Tibet, we have more. Sir, very recently, if you look into India and China's bilateral trade, sir, we have crossed $118 billion. China is the largest trading partner of India. Sir, how do we move forward? In a small manner, if we have to start, which I believe even government will think likewise. And I've heard our Deputy Chief Minister speaking on the Act East policy. I heard him speaking on various occasions on border trade and border hub. So we have to look into the growth of border trade. We have to encourage border hub. And I was just speaking to one of the commissioner, and I was so happy to hear that the land customs station, which was notified in 1951 in Nampong, and I'm told that very soon there will be activity based on that. We might have a land customs station there, like we have in Moray. Sir, it's time that we have to cry out. It's time that we have to reach out to the government of India, because Prime Minister himself is emphasizing on acting east. When our dynamic Prime Minister who says, Modi hai to mumkin hai, why don't we seize this opportunity and impress upon the government of India? And when they talk about सोच बदलना है, परसेप्शन को बदलना है, तो हम जो प्रिज्म हमने एक बनाया है हमारे चारों तरफ, और हमारे in the mainland India, everything is looked upon certain times through the prism of defense. तो जब हमारे प्रधानमंत्री ने सोच बदलने की बात की, जब हमारे फॉरेन रिलेशन मिनिस्टर ने, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने सोच बदलने की बात की, हमको ऐसा लगा कि उस कहीं ना कहीं वो ये संदेश हमें दे रहे हैं कि ये जो सरकार है इस बार हमारे भारत पे, वो पूर्व उत्तर राज्यों को सिर्फ सिक्योरिटी के प्रिज्म से नहीं देखते, वो हमें एनकरेजमेंट दे रहे हैं. And I think, and I would request Speaker Sir, through you to the Chief Minister and the Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh and the Council of Ministers, Sir, can we talk about reviving the border trade? Sir, in 2015, the border trade was abolished. It was made normal trade, sir. And when this was declared, sir, we have only one ICS in Moray, which handled 98% of the border trade with Burma. It collapsed. Out of the total bilateral trade with Burma, overland trade is only 2%. Out of the 2%, 98% of the trade was handled in ICS Moray. But as soon as border trade was abolished, that trade collapsed on a border as well. Sir, isn't it time? I know the condition on the other side of the border is not so conducive now. But history is a witness. We have lost opportunity before. I think we should not lose opportunity now in the able leadership of you and Chanaman, sir.
I think we should move a proposal and ask the government of India, can we revive the border trade? Because we have now in Pangso Pass, but we don't know under what modalities that border trade is being operated. Because 2015, all the FTA border trade has been rescinded. They have an FMR regime which allows a Burmese national to come to India, to Arunachal Pradesh, within a range of 16 kilometers, with a simple entry pass, not a visa is required there, and being monitored by the district administration, supervised by Ministry of Home Affairs. Sir, can we be more innovative there and think and talk to Government of India to revive the border trade? Sir, because if the border trade is reviewed, if it is restarted, it will mean only good thing for a state like Arunachal Pradesh. As I've said before, perception matters. If you look at us now, we might be in a corner. And as I've reiterated before, if you take a circumference with a radius of 1,000 kilometers, we are in the center of 10 Southeast Asian countries. And as I was listening to Prime Minister Ji before, he said, आप कहीं कोने पे नहीं है, आप एक द्वार मार्ग है, आप एक गेट है जहां से इंडिया को आ सकते हैं. When we have a Prime Minister like that, why cannot we cry out? Why cannot we cry out? Sir, we have two committees there in the Trade and Commerce Ministry, sir. Joint Working Group and Joint Trade Committee, which looks after the commercial relationship with Burma and border trade as well. Our honorable MPs here, our MPs need to work and see whether these committees are working or not. Because it is in our interest. Unless we cry out, who will listen to us? This is a democratic setup. We have only 2 Lok Sabha MP. If we were a state like UP, then I don't know what would have happened. But we have only 2 MPs, so we have to understand the reality. And we must cry out, and our MPs needs to be more vigilant. They have to speak. And I know they're speaking, they have to speak more. So as we know, we have a lot of potential. But sir, we are a consumer state. We are not a producing state. Our hope lies in Horti, sir. A product, very recently, Lower Subansiri district, under your initiative, CM sir and DCM sir, 1 district, 1 product. Lower Subansiri has chosen kiwi, and most probably Kipanyor will be choosing black cardamom. Sir, but if you look into the cultivation of these two, particularly cardamom, sir, and kiwi to that extent, sir, our cardamom garden is getting eaten up. We are losing the cover of this beautiful and the most productive cash crop that we have. And it is because of certain lacuna that I found. And with due humble submission, sir, I'll be moving a resolution soon on the State Nursery Act as well. And I believe the state government will look very leniently and encouraging way on that policy, on that resolution that I'm moving. Sir, there is so much to say. But they say art is long and time is fleeting. But I saw somewhere down deep in my heart, I feel that we are on a cusp of transformation in this state. We need all the legislator to be more active, to follow your footstep. I have seen you and DCM sir traveling around the state, in every corner. I've been following you too. You have gone to the places where none of our CM has reached before, none of our DCM has reached before. And you have gone, right from Vijayanagar to your own district, to the district of different belt. And I think it's time, sir, when you're talking about bottom-up approach, all our colleagues, and I believe they are planning, we must go back to our constituency, we must go back to our village
then only the policy and the plan that has been delineated by our excellency, having faith in the state government, then we can say, yes, we are in the right track. And so, as I was listening to our honorable colleague here and a senior, when he talked about the officers, I cannot agree more. Sir, every 5 years, our ACR is written. And most of the time, in our ACR, when it is written, is full and final. Many of us might not come back in the next assembly. But our officer, they have a long span, a confirmed stand, which will give them a finite years of service. And I've realized, sir, when I was traveling, until and unless the lawmaker of the state, until and unless the PRI leaders of our state, until and unless the implementing agency, which I would say the department, headed by the HODs, by the A's and the J's, until and unless the secretary commissioners, we are in sync. So whatever plan that we make, whatever laws that we'll pass, it will have no fruit. Because until and unless we work as a team on the ground, sir, we cannot achieve anything. And it is no rocket science, sir. If we are together, the points that I've seen as I was going through His Excellency's speech, all the things are possible. It is not impossible, sir, because very recently, as I'm touring, when I went to a school called Balam, sir, when I went in, I saw the school was in a dilapidated condition. So there was no ceiling. It was an old structure. But there was a zeal in the PRI leaders, there was a zeal in the public, and some officers who went with me, there was a zeal in them to do something. When I told them, and they were talking about schemes to revive that school, to get the infrastructure. But when I said, isn't it possible to do it on our own? I said, can't you give the bamboo? You have a bamboo garden, can't you give that? And one PRI leader said, yes, I will give. Another said, I will help and I'll supply the labor force, me myself working on that. Officer said, I will provide. There is no computer. I would like to give it from my own salary. I will give the printer. Some officer said, I'll give the chair. Sir, when we all got together, in a span of 4 days, I can share. I put it up in my Facebook page. Sir, it was done in 4 days. I saw the ceiling was done by bamboo. I saw the compound was being cleaned. I saw the officers contributing. I saw the PRI leader leading the people. Sir, they are learning from you. We are all learning from you too. And I believe in this August House, I can proudly stand and I'll speak as a member of this Legislative Assembly. Yes, Arunachal is in right hand. We are with the right leadership, and we have a government in the center which thinks of taking Arunachal and making Arunachal as one of the engine of growth in the years to come for this beautifully diverse country called India. And if we are together, सर वो बोलते हैं ना, खुद को करो बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. I think, sir, we are reaching that stage where we will ask, they will ask us rather, आपको क्या पसंद है? And a day will come, and I believe that the international trade will open. Our border, which is porous now, we will be engaging. There I say, with a very hostile country, which can become a tradable country. They have become the largest trading partner of India. One day we will be trading with them. A day will come when we will be trading with Burma, and through Burma, we will be trading with the entire Southeast Asian. And like
our honorable colleague here, Nick Cummins sir, was saying, and quoting our former minister, chief minister, late Dorji Khandu sir, आज हम कटोरा लेके जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि भारत सरकार हमको पूछेंगे आपने हमारे जीडीपी पे इतना बड़ा योगदान दिया है. Days are not far. We have the resources, we have the ability, we have the leader like you two who will lead us. And I'm very sure God will bless you too and bless each one of us. And a day will come when we'll all stand together and they will call us in the parliament of the country and tell us, look at this state called Arunachal, where they were and how they are and what they have achieved. We will become the leader of excellence in time to come. Thank you so much, Speaker sir. I fully agree with all the points, with all the plans that state government has, which was highlighted by a leading light by Her Excellency, our Governor. With this word, I would like to end my proceeding here. Thank you so much. God bless each one of us. Thank you, sir. Ex-rebel member of Bangling. Speaker sir, Deputy Speaker sir, thank you for allowing me to participate in the Governor's address delivered to this Assembly on the 15th of June this year. We appreciate the people of the state who had participated wholeheartedly the just concluded election held under the Election Commission of India for both the parliamentary and the state elections, justifying our faith in the democratic credentials of our country and being testimony to the saying that democracy is of the people, for the people, and by the people. The voice of the people of the state has spoken, and that voice has elected the BJP government in Arunachal. Now that the elections are over, I presume the government will sit down to do some serious business. Of working together as one team, Team Arunachal. And a level of gross happiness is reached, wherein there is an equitable distribution of development packages and programs, reaching to every corner of the state, and to truly reach a higher index of happiness. This can only be achieved if we have a vision plan, a plan to reach the last man, which the government is truly focused upon. I am glad that the government is coming up with a bottom-up planning and to take development to the last mile in consultation with stakeholders and to establish the ITA, Institute for Transforming Arunachal. A state-level policy think tank and knowledge partner to drive innovation in governance and to enable social transformation of the state. There is a saying that the care of human life and happiness and not their destruction is the first and only object of a good government, which this government truly ensures. Let me focus on 3 points. The Governor has stated many, which I cannot go into detail. The problems of unemployment of the youth of our state. The limited economic development has resulted in a significant inability to generate employment opportunities in our state for the youth. This
elevation of unemployment, dearths, and the dearth of job prospects is due to the exacerbation of an absence of industrialization. The government should focus more on this and to create more job opportunities for the youth of our state and to engage them in a positive way to come up with opportunities which are youth friendly, like tourism and medium and small business, which I presume the government is taking an initiative. I would also like to focus on the very essentials of education. The education in Arunachal Pradesh is a mixed picture with notable challenges and ongoing improvement. The annual status of education report, ASER, 2024 highlighted significant deficiencies in the basic reading and numeracy skill among the youth ages 14 to 18. For instances, 34% of our youth in Papumpari district couldn't read a class 2 level English test fluently, and only 31.9% could solve simple arithmetic problems. And due to low enrollment, 400 schools have been closed. The shortage of teaching staff is for all of us to see. More than 400 more assistant professors are needed in the government's colleges alone. The situation in the private colleges is also not very good. The state government has invested significantly in improving infrastructure. Approximately 1,300 crore was allocated in the last financial year, with further funds planned to the current year. Most of the schools, as many of the members have pointed out, is in a dilapidated condition. So that has to be maintained, and basic school classrooms should be constructed. The basic amenities of drinking water, essentials like toilet, separately for boys and girls, also should be the focus of the education department and the government. Now, the government has come up with a very innovative program of Mission Shiksha throughout the state of Arunachal, wherein it amplifies the growth and the infrastructure development of our schools. I would also like to request the government to kindly include Tirap district in this Mission Shiksha, wherein most of the schools in the districts are in a dilapidated condition, and they require and lack basic infrastructure. So these are policies which the government is adopting, and I'm sure, and with the new year, that this issue will be taken up seriously. And one of the concerns that is very pertinent to my mind personally, also I feel for the state as a whole, which the governor in his address has left out, and which I would like to emphasize. Here is the acute problem of drug addiction in our state. Drug addiction is a scourge and has cast a dark shadow over the lives of individuals and communities, which poses very serious challenges to communities and our society, and is against the social and economic development of the state.
the prevalence of drug addiction has reached such potential dangerous levels that if not checked now will lead to drastic situations. The planning process which we initiate for the government, all the programs that the government comes up with will become nullified if we could not control the drug addiction of our youth. And in the previous records of last year, the HIV incidence was 1,102 and 12. Now in a short span of 1 year, in 2024, the HIV incidence has rose drastically to 2024. These are issues which we have to focus upon. These are steps which we must be concerned of, because the very essential of our being is the youth of our state. We want our youth to be healthy. We want our youth to be empowered with the basic knowledge and skills. We want our youth to come up with greater knowledge and innovations, not to be taken effect by this dangerous trend. I would like to suggest to the government, particularly the health department, the effort must be made to combat this drug addiction, firstly. Secondly, to generate prevention and creating awareness programs. More awareness programs must be initiated. And thirdly, for its treatment and care with all the humanity that is in our being. And fourthly, to strengthen the law enforcement agencies, that proper surveillance be carried out and proper check and motivations to our police force must be made. And fifthly, what I feel is that some way or the other, there must be something, maybe external or whatever, to drastically reduce the strength and the pillar of our youth of Arunachal. There must be some intention or some intent somewhere of big organizations who are involved in this. And we have to check this, and for this proper checking of this drug addiction, a proper inquiry should be initiated, and all those involved should be dealt with seriously. Another thing that I would like to focus on, Deputy Speaker, sir, is that in the year 2010 and 11, 21 police stations in the TCL region was sanctioned as a special initiative, a special package by the Government of India, Ministry of Home Affairs, wherein 21 police stations were either upgraded or newly constructed. Most of the police stations have already been constructed, and within that police station, there is to be a strength of 91 police personnel. Now, what I have inquired from the sources is that there are only 10 to 15 police personnel in each and every new police station that has been constructed. As we all know, TCL region is a sensitive area. So I feel that greater emphasis should be given and focus should be made on strengthening the law and order programs in these 3 districts. And where the infrastructure has been made, keeping the infrastructure vacant without any personnel
staying in the campus will lead to further dilapidation of the conditions of those infrastructure that has been created spending so much money. So I feel that this also should be taken into consideration, and lastly, I would also like to give my appreciation to the government and His Excellency the Governor's speech for focusing on the development programs in its entirety, right from each and every individual concern, wherein it will bring out happiness to the people through its development packages and programs. And I'm sure with the target set aside by the government, this can be reached. The Prime Minister's vision of reform, perform and transform should be the agenda which we must embrace for aspirations to a Viksit Bharat 2047. I support the initiative of the government. I support the address of the Governor delivered to the Assembly. Thank you, Deputy Speaker, sir, for giving me permission to speak. Thank you. Thank you, Honorable Member. Next, Honorable Member Panit. Thank you, Honorable Deputy Speaker, sir, for giving me this opportunity to participate in थ्रो किया है, तौरों में देखा है और देख के हमको हमारे राज्य के जो वर्तमान और भविष्य के बारे में बड़ा होता है। जहाँ तक जितना भी अरुणाचल में आज तक का जो डेवलपमेंट हुआ है लास्ट 8 साल में, तो जितना भी यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन में रिलेटेड है, reformation for the interest of the people of the state and transformation in all developmental activities of the state. तो इसमें एजुकेशन सेक्टर्स, हेल्थ सेक्टर्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है, जो कि हमारे ह्यूमन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली हेल्थ। जो यहाँ जो मेंशन किया गया है कि हमारा जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, जो हॉस्पिटल्स है, हमारा स्टेट में आज तक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से जो फैसिलिटीज़ जो 5 लाख साल में दे रहा है और जो फ्री ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख का जो दे रहा है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और आने वाले 5 सालों में यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट का एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये हमारे लोकल पीपल के लिए, स्पेशली अरुणाचल के लिए ये बहुत खुशखबरी है। तो ये जो है हमारा आज के दिन में हम सब देखते हैं कि जब कैंसर पेशेंट आ जाता है, डॉक्टर्स जो है डायरेक्टली उसको बाहर रेफ़र कर देते हैं। जो मेनली टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मुंबई में रेफ़र कर देते हैं। फिर वहाँ हमारे लोग वहाँ रहने के लिए काफ़ी तकलीफ़ें उठाने पड़ती है। फिर दूसरा सिटीज़ में, जैसे कि दिल्ली में है या बेलोर में या कहीं भेज देता है। तो अगर ये आने के बाद, ये इंस्टीट्यूट, कैंसर इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ इस्टेब्लिश होने के बाद, ये हमारे यहाँ का जो पेशेंट के लिए ये बहुत लाभदायक होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारा सरकार जो है इसको जल्दी ही करेंगे और हमारे लोगों के लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा। तो जहाँ एजुकेशन सेक्टर्स में अगर हम कहें तो ओल्ड एग्जिस्टिंग जितने भी जो स्कूल जो फैसिलिटीज़ है उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए यह कहा गया है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ 8 सालों में स्कूल्स का तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। जितना भी जो जीरो एनरोलमेंट है उसको तो बहुत लोगों को एबोलिश किया गया है, और वहाँ का जितना भी जो फैसिलिटीज़ एंड अदर स्ट्रक्चर्स को जो एग्जिस्टिंग स्कूल में स्ट्रेंथनिंग किया गया है।
और आने वाले साल में भी ये अभी जो आने वाले साल में एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंट देगा, हम ये समझते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा एक डिपार्टमेंट है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट, एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट ला सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद फिर हम समाज में समाज डेवलप हो सकते हैं। समाज डेवलप होंगे तो हमारा राज्य ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाएगा, तो देयर बाय नेशन डेवलप जरूर होंगे। तो इसलिए ये एजुकेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे इसमें गर्ल्स चाइल्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है, जो दुलारी कन्या जो पिछली बार इट वाज 20,000 पर गर्ल चाइल्ड, इसका जो एक था, बट दिस टाइम इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 50,000 रुपीज़। इसका भी ये है कि जब डिलीवरी होंगे तब हमारा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में जब गर्ल चाइल्ड डिलीवरी होता है, उसके नाम पर जो 50,000 जो है वो वहाँ इनरोल किया जाएगा और डिपॉजिट किया जाएगा। एंड देन जब फर्दर एजुकेशन, जब हायर एजुकेशन जब जाएंगे आफ्टर 18 ईयर्स, अब तब जो है ये पैसा जो है उस एजुकेशन के लिए काम आएगा। ये बहुत बड़ा स्टेप है हमारा बेटियों के लिए, बहुत अच्छा स्कीम है। तो इस तरह ये जैसे कि फिर जैसे वुमेन का अगर हम कहें तो वुमेन एम्पावरमेंट तो दिया ही है, लेकिन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को या गवर्नमेंट की ओर से जो इंटरेस्ट लेस में बिना इंटरेस्ट में लोन देना, ये बहुत अच्छा काम है। ये हमारे लोगों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो सेल्फ एम्प्लॉयड कराता है, ये बहुत अच्छा काम है। इसलिए मैं सरकार को इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एंड देन एक तो हमारा जो आज का हमारा स्टेट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो समस्या है वो है अनएम्प्लॉयड का जो प्रॉब्लम्स है। हर साल में हमारे 30,000 लोग यहाँ से अरुणाचल प्रदेश का जो है बच्चे ग्रेजुएशन होता है, मास्टर डिग्री कर लेते हैं। तो हायर एजुकेशन का जितना वो करने के बाद भी, कंप्लीट करने के बाद भी, और नौकरी, सरकार नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए इस बार हमारा जो इस ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो स्पीच में है, 2 C ट्रिनिटी है, तो स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो ट्रिनिटी दिया गया है, और जिसके तहत आने वाले 5 सालों में 25,000 जो एजुकेटेड यूथ से उसको आदर एम्प्लॉयमेंट देगा या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अप टू मैनी एक्सटेंट दिस विल सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ही सबका जरिए है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का प्रॉब्लम का भी यही जरिए है। जो हमारा जो यूथ्स है, जो एजुकेटेड यूथ, समटाइम दे गो टू अनवांटेड और अनडिजरेबल एक्टिविटीज़, उस साइड में चला जाता है। जो सोसाइटी जिसको पसंद नहीं है उसमें चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो ये अगर ये जो 25,000 लोगों को हम अगर एम्प्लॉयमेंट दे सकता है या फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दे सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे रिफॉर्मेशन में जो अभी हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जिसमें बनाया गया है, जिसमें फेयरली आज तक काफ़ी एग्जामिनेशन हुआ है और हज़ारों लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया गया है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दिया गया है। तो हमारे काफ़ी लोग ले गए अपने जो सर्विस को। तो वैसे ही अभी ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये जो क्रिएट किया है, जो अभी इनोवेटिव जो क्रिएट किया, ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये काबिल तारीफ़ है। मैं इसके लिए हमारा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये हमारे राज्य के यूथ भविष्य का ज़िंदगी के सवाल है, इसलिए इसे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं सराहना करता हूँ और मैं टैंक्स देता हूँ। और एक जो इम्पोर्टेंट एक इसमें दिखाया गया है कि हम सबको पता है कि हमारा जो कैपिटल जो सिटीज़ है, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में वर्ल्ड क्लास कैपिटल सिटी नहीं है। तो अभी इसमें गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिवाइज द मॉडल और द मास्टर प्लान ऑफ द ट्विन सिटी ऑफ ईटानगर एंड नाहरलगुन टू इम्प्रूव इट इन द वर्ल्ड क्लास सिटी, कैपिटल सिटी। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा बात है। हम सब ये चाहते, हमारे लोग चाहते हैं कि
हमारा घर अच्छा होना है, हमारा घर सुंदर होना है, हमारे लोग सुंदर होना है। हम जब बाहर जाते हैं, जब दूसरे कैपिटल्स में जब हम विजिट करते हैं, वहाँ हमको देखने को मिलता है कि इतना वेल प्लान्ड वेल प्लान्ड टाउनशिप जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है बहुत सुंदर, उसका जो बिल्डिंग का जो सजाने का स्ट्रक्चर अलग, इनका जो रास्ता है, सड़क, हर कॉलोनी से सड़क जो है बहुत सुंदर से जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे मास्टर प्लान नहीं होने के कारण आज तक इतना अच्छा से नहीं हुआ है। तो इसके लिए सरकार जो इस बार जो है जो प्लान किया है कि आने वाले 5 सालों में ये जो है ईटानगर और नाहरलगुन ट्विन सिटी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, ताकि हमारे यहाँ का जो कॉमन सिटीजन है, हमारे लोग तो अच्छा से उसको रह सके, और हम बाहर से के लोगों को भी इनवाइट कर सके कि हम आप आइए हमारा कैपिटल को देखें। तो वो जो सिचुएशन अभी जो प्रोजेक्ट जो स्कीम जो अभी यहाँ पे प्रपोज किया है, ये बहुत अच्छा बात है। ये स्टेट का एसेट है, हम सब का एसेट है, हमारा भविष्य का एसेट है। और मैं पूरा विश्वास के साथ मैं मानता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये जरूर कामयाब होगा और कैपिटल को वर्ल्ड क्लास कैपिटल हमारा नाहरलगुन ईटानगर बनेगा। उसके साथ ही साथ सर यहाँ पे जैसे हमारे एक ऑनरेबल मेंबर्स ने कहा हाइड्रो पावर के बारे में। हाइड्रो पावर ये हम देखिए, हमारा जो स्टेट में आज रेवेन्यू अगर तो हमारा जो है अभी 1200 मेगावाट का चल रहा है, तो मोर देन 3000 मेगावाट का हो जाएगा, तब हमारा स्टेट रेवेन्यू जो है और होगा। अभी हमारा पावर सरप्लस तो है, तो सेकंड इन नॉर्थ ईस्ट, बट और आने वाला समय में या और सरप्लस होगा, तो जो सरप्लस होगा हम अपने बाहर पड़ोसी स्टेट को हम बेच सकते हैं, हम स्टेट रेवेन्यू उससे जनरेट कर सकता है। एंड अबव ऑल आने वाला उसके बाद फिर आपका जो डिवंग का जो हाइड्रो पावर है जो 2880 मेगावाट्स का है, अगर वो आता है तो और कितना हमारे स्टेट के लिए प्रॉफिटेबल है। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेट जो इतना रेवेन्यू यहाँ पे अपना जनरेट कर सकना है कि ताकि लोग दूसरा स्टेट के लोग भी हमारा जो स्टेट के लोगों को माने, हमारे स्टेट को सरकार को माने। जब हमारा माननीय मुख्यमंत्री जब बाहर में कहीं विजिट करता है तो दूसरा मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, उसको मिलने के लिए बैठा होना चाहिए, ताकि हमारा यहाँ अगर पावर सेंट्रिक होगा, पावर हाउस बन सकता है अगर होगा, तो रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा आएंगे, तो ज़रूर ये स्थिति आएगा और हमारा राज्य जो दूसरे राज्यों के मुकाबले में जो अपना जो रेवेन्यू जनरेशन में बहुत आगे निकल जाएगा। तो इसलिए ये जो अभी जो आने वाले 5 सालों में ये जो 2000 मेगावाट का जो कमीशन के बात किया है, ये काबिल तारीफ़ है और ये हम सब का स्टेट का एसेट है, हम इसको सपोर्ट करना चाहिए। एंड देन अभी एक हमारा यहाँ पे सर जो एक तो कि सरकार ने इस बार का जो न्यू फॉर्मेशन में जो वीकर सेक्शन के ऊपर जो इनिशिएट किया है, ये भी कमेंडेबल है कि वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी में ऐसे होता है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है या किसी को डिपेंड नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों जो विडोज है, जो इल्डरली जो पर्सन्स है, जो सीनियर सिटीजन्स है, और या जो फिजिकली जो डिसेबल पर्सन है यानी दिव्यांग, तो इन सब के लिए आज गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड कि इसको वीकर सेक्शन के लिए उनका लाइफ डे टू लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उसका डिग्निटी को इंश्योर करने के लिए सरकार ने काफ़ी स्कीम्स जो इस बार 100 डेज़ के अंदर में जो उठाने के लिए ये फर्स्ट जो स्टेप उठाया, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। और इस वीकर सेक्शन के जो वीकर सेक्शन का जो उसको देख के हमारा सरकार जो है इतना कमिटेड है अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कमिटेड है। इसलिए भी हमारा सरकार, हमारा माननीय पेमा खांडू जी को, मुख्यमंत्री जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम कहें तो आज के दिन में आज अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत आगे निकल गया हर कम्युनिकेशन में, चाहे वो रोड कम्युनिकेशन बोलिए, एयर कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन,
अगर हम रोड कम्युनिकेशन में कहा जाए तो एक ज़माना था, एक कैपिटल से एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाने के लिए 2 दिन 3 दिन लगते थे। आज मान के चले कि आप एग्जाम्पल लूँगा मैं अपने कोलोरियन जो क्रुंक में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का, तो यहाँ से एक ज़माना था कि 24 घंटा लगता था, लेकिन आज सड़क ठीक होने के बाद 5 घंटा लगता है। ये और के सिर्फ यही नहीं, पूरे अरुणाचल में जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे है, जिसके तहत आज हमारा स्टेट के लोग बहुत फ़ायदा हुआ है, और ये केवल हमारे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के द्वारा ही और उसके नेतृत्व में ही हुआ है। इसलिए हमारा केंद्र सरकार तथा हमारी राज्य सरकार को मैं पूरे दिल से और आत्मा से मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो वैसे ही अभी जैसे कि बहुत सा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना का जो सड़क ये योजना है, PMJCY रोड है, देन अभी वाइब्रेंट ब्लेज का आया है, और आने वाले 5 सालों में जो फ्रंटियर हाईवे है वो जितने भी बॉर्डर एरिया में कवरेज होंगे तो और हमारा जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का और सुविधा होगा। वैसे अभी हमारा इस हाल ही में जो डिसास्टर आया है, जो फ्लड हुआ है, और उसमें बहुत सा डैमेजेस हो गया। स्पेशली हमारा कोलोरियंग में 13 ब्रिजेस जो पूरा वॉश आउट हो गया, और कुरुंकुमे में इन टोटल 33 रोड्स को तो बहुत लोग वॉश आउट हुआ, कट ऑफ हुआ है, और इतना सस्पेंशन ब्रिज, वायर ऑफ सस्पेंशन ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज पूरा हट गया। हटने के अभी हम लोगों ने सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को इनको बताया गया है, इमीडिएटली इसका इनिशिएट हुआ है, और उनका रेस्टोरेशन के लिए भी जो पैसा जो है रिलीज कर दिया है। इसके लिए मैं हमारा माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और अभी आने वाला समय में जो भी अभी और रेस्टोरेशन पार्ट है वो भी करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो रोड कम्युनिकेशन अगर हम कहें तो बहुत हम आगे निकल चुके हैं। तो इन कंपेरिजन तो अदर स्टेट ऑल्सो कि हमारा ये एक हिली रीजन है, हिली एरिया में इतना बढ़िया सुंदर रोड बनाना ये बहुत अच्छी बात है। एंड देन अगर हम कहें तो एक आप देखिए एयर कम्युनिकेशन में अगर हम देखते हैं तो पहले हमारा अरुणाचल जो है हमारा इंडिया का जो मैप में, यानी जो सिविल एविएशन का मैप में नहीं था, मगर आज हमारे सिविल एविएशन का मैप में हमारा अरुणाचल भी जोड़ा गया है। जो डोनी पोलो जो एयरपोर्ट जो यहाँ होलोंगी में आ गया, ईटानगर में आ गया, एंड देन अभी तो जो अभी तेजू वाला तो है ही है, देन पासीघाट का है, देन जीरो का है। तो अभी सिविल एविएशन का मैप में जुड़ गया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमारा सरकार का बड़ा अचीवमेंट है। जो हमारे अचीवमेंट जो हमारे लोगों के लिए, हमारे पब्लिक, हमारे जनरल पब्लिक, हमारे लोगों के लिए और जो टूरिस्ट के लिए ये बहुत आगे हो गया हम लोग का ये जो कम्युनिकेशन में। अगर हम टेली कम्युनिकेशन कहें तो टेली कम्युनिकेशन भी हम सब जानते हैं आज बस्ती बस्ती में, हर क्षेत्र में, हर इंटीरियर प्लेस में आज पहुंच गया। ये केवल सरकार के वजह से ही है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में जितना भी जो सुविधा दिया गया है ये उनके जरिए है, उनका सरकार के जरिए है। तो इसलिए मैं पूरा हमारा दिल से मैं फिर से उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वैसे तो बहुत कहने का है, फिर भी मैं यहीं पे अपना जो भाषण को मैं ये रखता हूँ। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ द मोशन ऑफ थैंक्स में भाग लेने के लिए मौका दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। नेक्स्ट ऑनरेबल मेंबर्स डॉक्टर महेश चाय। धन्यवाद ऑनरेबल स्पीकर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं भी यहाँ माननीय राज्यपाल जी के जो मोशन ऑफ उनका जो भाषण था असेंबली में उसके मोशन ऑफ थैंक्स में मैं भी पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। एट द वेरी आउटसेट मैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी को हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। उनके 8 साल
एज चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश के कंप्लीशन के शुभ अवसर पर, और हमारे राज्य के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार है राज्य में अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू, उसके ऊपर अपना विश्वास जताया और हमारे पार्टी को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को तीसरा कार्यकाल पेमा 3 के रूप में लोगों ने एक थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जिता के एक अपना आशीर्वाद दिया। 25 जून 2024 को माननीय गवर्नर ने हमारे इस हाउस को एड्रेस किया था और उन्होंने अपने 15 पेज के जो स्पीच है उसमें उन्होंने हमारा जो भी सरकार का कार्यकाल रहा है उसमें जो भी अचीवमेंट्स हमारे सरकार के द्वारा किया गया है और आने वाले 5 साल में जो भी हमारा सरकार का विजन है उसका रूपरेखा उन्होंने उस लेक्चर में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आज उसी कंसेप्ट के ऊपर इस जो कंसेप्ट है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ले